discussion. I'll be writing everything properly, okay, so that you can note it down. But first you need to understand it, okay. How exactly we'll be proving it, first you need to understand it. So what the basic proportionality theorem says, or what Thales theorem says, that if we are having a triangle ABC, and if a line is there which is parallel to one of the side, if a line EF is there which is parallel to one of the side and intersecting the other two sides, so basically what we need to prove here, we need to prove that this is everything, the discussion is the rough portion. Okay, so please just sit quietly and try to understand. Noting part, I'll be writing everything properly in the fair portion. Okay, so AE by EP is equals to AF by FC. That's what we have to prove over here, right? This is what we have to prove. Now what we are going to do here, at first we will be doing few construction. Okay, so from the vertex E, I'm dropping a perpendicular, and altitude I'm drawing over like this. Okay, from the vertex F also I'm going to draw an altitude over. Altitude, when I'm saying, you should understand altitude means 90 degrees, like this. From the vertex, like the vertex B and the vertex F, I'm going to join them, just joining them. Okay, like this. And C and E also we are joining it. So let me summarize what we did. From basic proportionality theorem, do we understand that this is what we have to prove? Do you understand that it just says that if EF is parallel to BC, then this is what we'll be getting. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, everyone needs to reply over here. Okay, because whenever a student doesn't respond, I think that yeah, they must be getting it. That's why they are not saying it. Like they are not responding, or they are not saying anything over here. But today only I got to know that one of the student was not getting anything from so many classes, from last few classes. Okay, maybe 10 classes, 20 classes, or I don't know how many classes. And today the student said, I'm not getting anything. Okay, I'm not getting anything. When we were discussing one to one. So please respond. Then only I will move ahead. Everyone, Afnan, Ayan, and Ifra. Once I will get the response that yes, you are getting, I will move ahead. Otherwise, I will keep on sitting. I will keep on asking, are you getting it? Are you getting it? Are you getting it? Okay. Yes, ma'am. Okay. So are you understanding that what we have to prove over here? Forget about the construction part. First tell me, are you getting what we have to prove over here? Yes, ma'am. Yes. Afnan, you are getting. Ayan, you are getting. Ifra, are you getting? Yes, Abdul. Just now I have started. I said that from basic proportionality theorem, we know that if we are having a triangle, okay, suppose the name of the triangle is ABC, and if there is a side, there is a, Abdul, you are there, right? Yes. Okay, so last class we were discussing that if we are having a triangle ABC, okay, if there is a line which is parallel to one of the side, a line EF parallel to one of the side BC, then AE by BE will be equals to AF by FC, right? Right, the ratios will be same, right, Yes, Abdul? ma'am. Yes. Okay, now we want to prove it over here. Today we will be discussing that how to prove it. Okay, how to prove it. So what we are doing to prove, we are doing construction. Okay, now while doing the construction, see it carefully.
from the vertex E, we are dropping one perpendicular on the side AF. Okay, and we are calling that we have dropped altitude. We have dropped altitude from vertex E. Altitude means a 90-degree we have dropped. Okay, now we will be dropping one altitude again from the vertex F also. A 90-degree we will be dropping. This 90-degree, this line is called altitude. Okay, so suppose this is E M. Okay, suppose this is N. Okay, so we have dropped same way. Fn is also perpendicular to the side AE. Okay, this is also an altitude we have dropped. This construction we have done. We have also done this construction. What we will be doing after that? One more construction we will be doing to prove it. We will be joining B with F. Okay, this proof is quite tricky. So again and again I'll be just explaining it. Okay, you don't have to note down anything today. You just have to sit and listen to me carefully. Okay, and try understand. We'll be joining B with F also, and we will be joining E with C also. This much of construction we need to do. Two altitudes we have dropped on the smaller triangle, the upper one, and to this diagonal we have joined. Okay, B with F and E with C. After this one, to prove it, I am going to give you one concept, okay, which you need to know, which is like directly we will be writing it over here, but you need to know. Do you know that the height of a triangle, suppose we are having a triangle like this, do you know that if this triangle is PQR, then if you will be dropping a perpendicular from the vertex P, do you know that sometime when you will be dropping the perpendicular, when you will be making the height, it can lie outside the triangle also? Do you know that? Yes. You don't know. Do you know? Okay, if I am calling this as PM, then this is the height. Okay, this is the height. A perpendicular we have dropped. This is the height, and it can lie outside the triangle also. Till now, you must have seen whenever you are dropping the perpendicular, a height you are trying to make, it is just lying inside the triangle. But let me tell you, it can lie outside the triangle also. It can be the possibility. And if you have to find area of this type of triangle, you will be writing 1 by 2 into base, okay, into height. Okay, now the base, you can see clearly that the base is QR over here. Okay, that QR we have extended and we ended up meeting with the height, but the base is QR only. Now again I want to explain something, that what is base. Base means if you are having a triangle, okay, suppose the name of the triangle is MNO, and from N if I am dropping a height like this, can you tell me what is the base over here and what height is? Height is NP. What is the base over here? Yes, Afnan, Ayan, Ifra, Abdul, what is the base over here? NO. Yes, NO you said. NO is the base. N. Yes. Okay, let me tell you, the base is the side on which you are dropping the perpendicular. Here MO is the base. This is the base. Base is the side on which you are dropping the perpendicular. Base का मतलब ये नहीं होता है कि base ground level में हो, base हमेशा horizontally दिखे. No, base means
base means the side on which you are dropping the perpendicular. जिस साइड पे परपेंडिकुलर और हाइट हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं वही हमारा बेस होगा. तो अगर हमने एन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये किस साइड पे ड्रॉप किया, एमओ साइड पे, तो यहाँ हमारा बेस होगा एमओ एंड हमारा हाइट होगा एनपी. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? Yes, ma'am. Okay, if I'll be drawing a triangle like this, okay, let's say the name is RST and इस बार मैंने T से perpendicular drop कर दिया, एक height बना दिया. Let's call it maybe TR. Okay, TR is the height. Now again अगर मैं पूछूं कि कौन सा साइड यहाँ पे बेस है, R is also already there. Let me call it O. Okay, TO. TO is the height. तो अगर मैं पूछूं कि बेस फिर कौन सा साइड है, तो कौन सा साइड बेस है यहाँ पे, RS. RS. जिस साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उस साइड को हम बेस बोलते हैं. और परपेंडिकुलर ऐसा नहीं है कि हम ऑलवेज जो लाइक वर्टिकली ऊपर की तरफ दिख रहा है वहीं से ड्रॉप करेंगे, नहीं, वो तो जनरल फॉर्म है. हमेशा अब तक हमने कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये एबीसी ट्रायंगल हुआ करता था एंड वी यूज्ड टू ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, बट दिस इज द जनरल फॉर्म. Okay, you can drop perpendicular from B also, you can drop perpendicular from C also. Okay, height you can take from C also, height you can take from B also. इस ट्रायंगल में D, okay, B E 90 degree 90 degree and here also 90 degree. F, इस ट्रायंगल में ADB हाइट है, okay, BE भी हाइट है, सेम हाइट, okay, and CFB height है. These all are heights. You can take any height. Now the measurement of these all the heights will be same. It depends. Okay, always it will not be same, but by taking whatever height and whatever base, whatever area you will be finding, कोई भी हाइट और बेस को लेके अगर हम एरिया फाइंड करने के लिए अगर ये फॉर्मूला यूज करें 1/2 इंटू, अगर हमने हाइट AD ले लिया और बेस BC ले लिया तो जो एरिया निकल के आएगा सेम एरिया हमें मिलेगा 1/2 इंटू अगर हम हाइट BE ले और बेस AC ले, और सेम एरिया हमें मिलेगा अगर हम हाइट CF ले और बेस AB ले. Am I making sense to all of you? Ma'am, I don't understand. I'm saying अगर इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है तो हमारे पास क्या है, ABC ट्रायंगल है. We could have taken height as a AD and base as a BC, right? Yes, ma'am. And we can get the area. Okay, suppose ये हाइट हमें नहीं पता है, okay, forget about this scenario. या फिर ये हाइट just keep it aside for a while. Okay, इस बार हमने एरिया सेम ट्रायंगल का एरिया इस हाइट को लेके फाइंड किया, BE हाइट को. तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अगर हमने हाइट BE लिया तो हमारा बेस तो AC होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, तो इस फॉर्मूले से भी जो एरिया निकल के आएगा पहले वाले एरिया के इक्वल ही होगा क्योंकि हम सेम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. तो कोई भी बेस और हाइट का पेयर हम ले बट एरिया का आंसर तो सेम ही आना है. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, अगर मैं यहाँ एक ट्रायंगल क्रिएट कर दूं और मैं बोलूं कि ये साइड 6 है and this side is 7. Okay, now this height I am giving it to you. Let's say I am saying that this altitude is there. Okay, and the length of this altitude is, let's say, 8. So find the length of this altitude. Okay,
Let me call it ABC. Let me name it B and here. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दो साइड्स पता है, ओके, एक हाइट पता है, दूसरा हाइट हमें फाइंड करना है. लेट मी राइट इट व्हाट वी नो दैट AB इज 6 centimeter, okay, we also know BC is 7 centimeter, okay, we know that the perpendicular, the height AD is 8 centimeter, and we have to find CE, the height. तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम बोलेंगे कि चलो इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बेस एंड हाइट दिया होगा. अगर हम ये ट्रायंगल देखते हैं, ओके, और अगर हम इस हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट AD की, so can we use this formula that area of triangle is equals to 1/2 into base into height. Here height I am taking as a AD. So which side will be the base? अगर हमने AD height लिया है तो base कौन सा होगा? BC. BC. Everyone getting it? अगर हमने height AD लिया है तो base BC होगा. Everyone getting it? Afnan, Alvina, Yes, ma'am. Alvina, are you getting? Abdul, Ifra, yes, Abdul, Ifra, Alvina. Alvina, अभी अभी मैंने बोला है कि हाइट एंड बेस का मतलब होता है जिस साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं उसे ही हम बेस बोलते हैं, ओके. तो अगर हमने हाइट AD लिया तो ये जो परपेंडिकुलर है कि कौन से साइड के ऊपर है, BC के ऊपर, सो बेस हमारा BC होगा. एवरीवन गेटिंग इट? yes or Yes, no? ma'am. Okay, so we are getting this as a area. BC हमें already पता है, ठीक है, AD हमें already पता है. Let's try finding the area. 1/2 into base. BC is 7 and AD is 8, and our answer will be 28 centimeter square. हमें इस triangle का area पता लग गया 28 centimeter square. अब हमें क्या फाइंड करना है, और एक हाइट यहाँ पे दिख रहा है CE, वो उसका लेंथ हमें फाइंड करना है, ओके. सो व्हाट वी विल डू, फिर से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और इस बार दूसरा इस हाइट को यूज करेंगे, ओके. हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, freshly I am drawing it. Now we will be focusing on this height, okay, and this base. तो क्या हम एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस इज AB इंटू हाइट इज CE. कैन बी राइट? कैन बी? यस और नो? क्या सेम ट्रायंगल का एरिया हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस, वी कैन फाइंड इट. सेम ट्रायंगल का एरिया हम कोई भी एक बेस और हाइट का पेयर लेके फाइंड कर सकते हैं, हमारा आंसर डिफरेंट नहीं होगा, ओके. हमारा आंसर डिफरेंट नहीं होगा. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम ट्रायंगल, आवर एरिया विल बी सेम, ओके. द पेयर ऑफ बेस एंड हाइट कैन डिफर but the area will be same, okay. So here we know AB as a 6 and we don't know CE, but ये फॉर्मूला हमने किसके लिए अप्लाई किया है, एरिया के लिए. एरिया तो हम ऑलरेडी जानते हैं, एरिया इस ट्रायंगल का 28 है. दूसरे बेस और हाइट से मिला तो क्या हुआ, एरिया तो सेम ही है. हैव यू डन द have you learned Heron's formula in previous class? Yes, ma'am. So do you know that finding area by Heron's formula and finding area by taking the height and base, the area will be same? It's just two different ways are there. Do you know that? Do you know that?
ओके यू डोंट नो, लेट मी शो इट टू यू. अगर मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, ओके, अगर मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, दिस साइड इज 6, दिस साइड इज 6, दिस साइड इज 8, ओके. यहाँ अगर हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दिस इज पी क्यू आर ट्रायंगल, तो हमारा ये जो साइड है क्यू आर, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. क्यों? कंक्रुएंसी की हेल्प से. ओके, यू विल फाइंड दैट पी क्यू एम एंड पी एम आर, ये दोनों कंग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे. दिस एंगल, दिस साइड सेम, 90 degree here, 90 degree there, and one of the common side PM both are having, so congruent हो जाएंगे दोनों. और उसकी हेल्प से हमें ये पता लगेगा कि ये साइड और ये साइड CPCT से दोनों ही इक्वल है. तो अगर ये टोटल लेंथ 8 है तो ये 4 एंड ये 4. ओके, मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ शो करने का कि हीरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया फाइंड करेंगे और हाइट फाइंड करके जो एरिया फाइंड करेंगे ओल्डर फॉर्मूला से, एरिया हमेशा सेम होंगे क्योंकि हम सेम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है बट एरिया सेम ही होगा. Okay, now if you will be taking this right angle triangle, this is 6, okay, this is 4, you will be getting this side as a root 20. Let me tell you, you will be getting root 20. अब अगर हीरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया फाइंड करने की कोशिश करें, that is s minus a, s minus b, s minus under root. Everyone getting it what I am writing on the screen? Everyone getting it? Okay, it is creating more confusion, I think, because you are not able to just connect the concept that way. So I'm telling that whatever formula we are using, our area will be same. Okay, the value of the area will be same. So if we have to find the area of this triangle ABC, you can use this 1 by 2 into height. Okay, this is the height and this is the base. This formula you can use, or the same triangle I am copy pasting over here. If you know this is perpendicular, this is C, then you can find the area. 1 by 2 into base is AB over here and height is CE over. Now just keep in mind that this area answer and this area answer will not be different because same triangle I have copy pasted. Now is it this much is making sense to all of you? Are you getting it? कि ये एरिया, ये वाले फॉर्मूला से जो एरिया का वैल्यू निकल के आएगा और ये वाले फॉर्मूला से जो एरिया निकल के आएगा, दोनों रिजल्ट सेम होगा क्योंकि हम सेम एबीसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. एवरीवन गेटिंग इट सो फार? यस और नो? इफ्रा यस, यस अफनान, आयान, अलबीना, Yes, ma'am. ओके, अब्दुल, Ayan, you are getting it right? Yes. Yes, ma'am. Okay, so our answer will not be different. Okay, this much understanding we are having, whatever height and base pair will be taking, but at the end, the area will be same. Okay, so leave this question. I was explaining you what is base, what is height, and one more thing you need to keep in mind that ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में जब भी हम हाइट और ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो वो ट्रायंगल के बाहर भी लाई कर सकता है. ऐसे ट्रायंगल होते हैं.
Okay, we are having such triangle, okay, in reality, where we will try dropping the perpendicular from any one of the vertex, and you will find that that perpendicular is lying outside of the triangle. इस triangle में, ये green color triangle में, let's call it PQR, we are trying to drop the perpendicular. We are trying to make an altitude. Let's say this altitude is PM. But when we try dropping the altitude, all of a sudden we notice that it is lying outside the triangle and it is completely fine. This type of scenario exists. Okay. So अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, फिर कैसे फाइंड करेंगे हम? तो हमें like what we will be doing, we will be taking 1 by 2 into base. Base is just QR. Okay, just QR, because after extending QR, it is meeting the height. So base is just QR. ट्रायंगल के सिर्फ एक साइड को ही हम बेस बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड साइड को बेस नहीं बोलेंगे. कैसे हमने बेस डिसाइड कर लिया यहाँ पे? क्योंकि इस साइड को अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये हाइट से मीट कर रहा है. तो उस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि यहाँ QR बेस है एंड हाइट हमारा PM है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो आई एम समराइजिंग. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ऐसे भी ट्रायंगल हो सकते हैं जिसका हाइट ट्रायंगल के बाहर लाई कर जाए. वहां पे कैसे एरिया निकालते हैं वो मैंने बता दिया. और मैंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि हाइट और बेस कैसे डिसाइड करते हैं. हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है ट्रायंगल में, उसे ही बेस हम नहीं बोलते. जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो ही साइड हमारा बेस होता है. ओनली दिस टू थिंग्स. इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं basic proportionality theorem. Okay, the statement is written over here. Let's read it. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. Okay, so if we are drawing a line in a triangle, ये सारे कंसेप्ट हमने अभी 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 हमने जो डिस्कस किए ये यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ABC and if there is a line EF parallel to BC, EF parallel to BC, then the ratio AE by BE will be equals to AF by FC. इससे प्रूफ करने के लिए ये हमें प्रूफ करना है. Okay, today you don't have to note down anything, you just have to focus over. इससे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे. तो ये जो स्मॉलर ट्रायंगल हमें दिख रहा है AF AEF, यहाँ हम एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे. ओके, वी कैन कॉल इट M एंड F वर्टेक्स से भी हम एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे एंड वी कैन कॉल इट N, FN. उसके साथ साथ और भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. B एंड F को हम ज्वाइन कर देंगे एंड E एंड C को हम ज्वाइन कर देंगे. कंस्ट्रक्शन मैं ब्रीफली यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि ये जस्ट लाइक फेयर क्वेश्चन नहीं है. यहाँ जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सर. ओके, सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? एक EM परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. कौन से साइड पे? AF पे. और एक FN परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. कौन से साइड पे? AE पे. एंड उसके साथ साथ हमने BE ज्वाइन B and F and also C
and E. Okay. Now we will be proceeding. So हमें प्रूफ क्या करना है, AE by BE, AF by FC. अब ध्यान से देखो ये AE को, AE हमें यहाँ से एक ऐसा ट्रायंगल चूज करना है जिसमें AE प्रेजेंट रहना चाहिए. Can you tell me which triangle can be taken? जिसमें side AE must be there. Can we take this triangle, the smaller one? Can we take? Yes or no? Can we take it? Yes, we can take it. Let's take it. We are trying to take such a triangle where this AE must be present. It is giving the low battery. Just a yes. So we are trying to take such a triangle. क्योंकि हमारे प्रूफ में न्यूमरेटर में AE है, तो हम एक ऐसा ट्रायंगल सर्च कर रहे हैं जिसमें AE साइड तो होना ही चाहिए. ओके, एरिया की हेल्प लेंगे हम यहाँ पे. सो वी आर चूजिंग ट्रायंगल AEF. नाउ इन दिस ट्रायंगल AEF, if you have to find the area of the triangle AEF, AE रहना चाहिए, ठीक है. If you have to find the area of the triangle AEF, area of triangle AEF, can we write 1/2 into base? अभी अभी मैंने बोला AE तो रहना ही चाहिए, एरिया जो हम एरिया लिख रहे हैं यहाँ पे उसमें साइड AE मस्ट बी देयर. सो 1/2 बेस हम AE रख रहे हैं. और हाइट, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द हाइट? FN. FN. एवरीवन गेटिंग इट? अगर हम AE बेस मेंटेन कर रहे हैं तो FN हाइट होगा, आया ना? Afnan, are you getting? Ifra, are you getting? Abdul, are you getting it? Yes, ma'am. Alvina, Yes, ma'am. ओके. ये तो हुआ न्यूमरेटर की बात. अब डेनोमिनेटर में हम हमारे प्रूफ के डेनोमिनेटर में ध्यान से देखेंगे क्या है. तो हमारे प्रूफ पार्ट में डेनोमिनेटर में BE है. दैट मीन्स अब हम एक ऐसा ट्रायंगल चूज करेंगे जिसमें एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और BE रहना ही चाहिए. ओके, या तो बेस या फिर हाइट, जो भी. सो कैन वी टेक ट्रायंगल BEF? We can take it, right? Triangle BEF, and here also we'll be using the area. So 1/2 into base. अभी अभी मैंने बोला BE तो हम यूज करेंगे या तो एज अ एरिया, या तो एज अ बेस या फिर एज अ हाइट. सो BE को बेस मेंटेन कर सकते हैं हम. हाइट, दिस इज नॉट अ हाइट. BE is not a height. BE is a base. Now again I am asking you, can you tell me what is the height? Which triangle? This triangle. इस ट्रायंगल का हाइट क्या है? अभी अभी हमने वर्टेक्स F से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था जो कि ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है. क्या ये हाइट ले सकते हैं? यस और नो? कैन वी टेक दिस एज अ हाइट? Yes. बिकॉज इट Yes, इज ma'am. 90 डिग्री. एंड ट्रायंगल का हाइट ट्रायंगल से बाहर. यस, दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट मेकिंग द प्लॉट ओवर देयर, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रायंगल का हाइट ट्रायंगल के बाहर भी लाई कर सकता है. ओके, सो यस, FN इज द हाइट. ट्रायंगल BEF में BE बेस है और FN हाइट है. इट्स दैट सिंपल. ओके, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. FN इज द हाइट एंड BE वाज द बेस. कहां से हमें ये आइडिया आ रहा है?
एक एक ट्राइंगल हम कैसे ले रहे हैं, हम जस्ट अपने प्रूफ को देख रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली हम ट्राइंगल्स चूज कर रहे हैं. आई विल बी समराइजिंग इट. ओके, नाउ अनदर साइड ऑफ द प्रूफ वी आर हैविंग ए एफ. तो अब हमें एक ऐसा ट्राइंगल चूज करना होगा जहां ए एफ साइड हो. कैन यू टेल मी विच ट्राइंगल? अगेन हम ट्राइंगल ए ई एफ ही लेंगे एंड इस बार हम ए एफ को बेस यूज करेंगे. सो 1/2. अभी अभी मैंने now only I was explaining it that you can find area by taking any pair of base and height. Okay, area will not be different, area will be same. So AEF triangle, again we are finding, see already AEF triangle area we have found, but that time AE as a base we have maintained. Now AF as a base I am going to maintain. And can you tell me what will be the height then? EM. EM. Everyone getting it? Getting it? Afnan, Ifra, Alvina, are you getting it? Yes? Yes, ma'am. Okay, everyone is getting. Yes, Abdul, are you getting it? Now हम फिर से हम अपने प्रूफ पार्ट में जाएंगे और देखेंगे अब क्या बचा. Okay, then we can see here in the denominator FC is there. In the denominator FC is there. And again we will be asking question from ourselves कि कौन सा ऐसा ट्राइंगल ले जहां पे FC as a base हमें मिल जाए. Can you tell me which triangle can be taken? CEF. Yes, CEF triangle अगर हम ले तो यहाँ FC is a base and what is the height? EM. Yes, EM. EM is the height. Triangle के बाहर triangle का height lie कर सकता है. Okay, let me highlight it. We have taken this triangle. Okay, and which one is the height? From E, a perpendicular we can see, and that is called EM. And that perpendicular we have taken over here as a height. Getting it? Getting it? Everyone Yes. getting it? Ifra, Afnan, Alvina. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Abdul. Okay. So we are done. Almost we are done. Now I am summarizing what we did. Construction में हमने क्या किया, जो ऊपर like the teeny tiny triangle we are having, in that triangle we are dropping two altitude, one from E, another from F. Okay, one more construction we are doing, we are joining point B with point F and point C with point E in our figure. Okay, now we are focusing, we are keeping our focus on the proof part. And in the proof, in the numerators part, AE is there. So we are trying to search such a triangle where the base is AE. So we are writing the area of the triangle AEF. Area, will be taking the help of area to do the proof. Okay. So we are taking triangle AEF and the base we wanted to maintain AE and we are able to maintain the base as a A. 1/2 into AE into FN. FN is the height which we have already done the construction. Now the denominator is BE in our proof part. So we are choosing such a triangle and finding the area by maintaining the base as a BE. And height, we are clear with height. Okay. Similarly, on the other side, we are having AF. So we are choosing such a triangle where we are taking AF as a base. Okay. And in denominator, we are having FC.
So we are choosing such a triangle where we are maintaining FC as a base, and height we are clear with that. Our construction is helping us for uh, our construction part is helping us for taking the height, which one will be the height over here. So this much is clear to us. Now we can see over here. We can see over here if we will be like we have to find the ratio between these two, right? The ratio between these two and the ratio between these two area. Okay, area of this one, area of this one. If we will be able to say that both are same, then we are done. Okay, so what we want to say, we want to say that if any way we can say that area of triangle AEF over area of triangle BEF. लेट्स सी क्या हमें मिल रहा है. अगर हम रेशियो फाइंड करने की कोशिश करें, रेशियो हमें एरिया का नहीं फाइंड करना था, रेशियो हमें AE बाई BE फाइंड करना था. बट अगर हम अपने एरिया का रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. ओके, सो कैन यू सी 1/2 into AE into FN. Okay, and here 1/2 into BE into FN. 1/2 गॉन, FN गॉन. एरिया का रेशियो हमें क्या मिला, AE बाई BE. यस और नो? अगर हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेके जस्ट फॉर चेकिंग एरिया का रेशियो चेक करने के लिए हमने प्लेस किया ऐसे, तो हमें रेशियो AE बाई BE मिल रहा है. इज इट क्लियर सो फार? इज इट क्लियर? Yes. ओके, अगर हम दूसरे दो एरियाज को लेके अगर हम जस्ट चेक करना चाहें कि हमें क्या रेशियो मिल रहा है, सेम है नहीं सेम है, विल बी कमिंग टू दैट. ओके, लेट्स चेक वेदर दिस टू आर सेम और नॉट. लाइक व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम हियर? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF over area of triangle CEF. ये रेशियो हमें क्या मिल रहा है? तो ये रेशियो 1/2 इंटू AF इंटू EM. लेट मी राइट इट. 1/2 just a second no? 1/2 into AF into EM over 1/2 into FC into EM. EM gone, 1/2 gone, and we are getting AF by FC, right? Right. Now if you can see both the area, can you see the numerator part of both is exactly same? Can you see it? Can you see it? अगर हम कैसे भी करके ये प्रूफ कर पाए कि डेनोमिनेटर में भी जो एरिया हमने लिखा है वो दोनों का एरिया सेम ही होगा, अगर कैसे भी करके हम ये बता पाए कि ये एरिया ऑफ BEF एंड एरिया ऑफ CEF इज द सेम, then we can say that this ratio and this ratio is same. Yes or no? न्यूमरेटर पार्ट में दोनों रेशियो में एरिया सेम ट्रायंगल का है. अगर हम कैसे भी करके ये बता पाए कि डेनोमिनेटर में भी हमने जो ट्रायंगल लिखा है वो दिख तो रहे हैं दो अलग अलग ट्रायंगल, बट उसका एरिया सेम ही होगा. अगर हम ये बता पाए तो हमारा दोनों रेशियो हम कंपेयर कर सकते हैं, हाँ या ना? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. Okay, so numerator, in denominator we are having BEF and CEF. Again I am drawing the same figure. Okay, because that figure I have done that much of like lining and all, so I'm just copy pasting it. What we want to show, we want to show that BEF and CEF both areas are same. Triangle BEF and CEF, these two triangles areas are same only. That's what we want to
proof over here. That's what we want to say. Okay, let's focus it. BEF, I am highlighting it. BEF, this triangle, and CEF. ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, ये हम अभी बोलने वाले हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर दैट दिस टू ट्रायंगल विल बी हैविंग सेम एरिया. व्हाई? Think about it. We are having EF parallel to BC. Okay. Both are having same basis, EF, EF. Okay. Here also, if you will try writing area, it will be 1/2 into EF. Okay. Here also, if you will try writing area, it will be 1/2 into EF as a base. Okay. And what about the height? So are you getting it? अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में यहां से हाइट ड्रॉ करें, या यहां से हाइट ड्रॉ करें, या यहां से हाइट ड्रॉ करें, या फिर ये हाइट ड्रॉ करें, या फिर कोई भी एक हाइट हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, सारे ही सेम लेंथ होंगे. क्या ये हम समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? If you are having two parallel line, then perpendicular distance from here, or maybe perpendicular distance from here, or maybe perpendicular distance from here, these all will be same. That is the property of parallel line. Yes or no? Yes, ma'am. तो पैरेलल लाइन के ऊपर अगर सेम बेस पे दो ट्रायंगल क्रिएट होते हैं तो उनका एरिया हमेशा सेम होता है. क्यों? क्यों? क्योंकि बेसिस सेम है, EF, EF, एंड हाइट भी सेम ही होगा, क्योंकि हम पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं. ये जो हाइट हम ड्रॉ करेंगे ग्रीन ट्रायंगल के लिए, लेट मी ड्रॉ अ ग्रीन हाइट, this height, okay, from B. Okay, and for purple triangle, a purple color height, if I'll draw, which is lying outside the triangle, but that is fine. So can we say this length, if this is H, that will also be H? Can we say that since we are having two parallel line, here also it will be H, here also it will be H? Yes or no? Yes, ma'am. Now only we will be writing that area of triangles having same base, lying between two parallel lines are same. This just a statement will be writing. And what was this all? This was just the explanation that अगर हमारे पास दो parallel line है, okay, if we are having two parallel line, and if on the same base we are drawing two triangle, okay, maybe one of the triangle like this, and on the same base maybe the another triangle looks like this. These two triangles area will be same, because if you will be dropping a perpendicular over here, this one, or you will be dropping a perpendicular over here, it looks like a perpendicular, but I wanted to draw something like this. Okay, if you will be dropping a perpendicular over here, this two perpendicular will be of same length. Are you getting it? And hence area of BEF and CEF will be same. Now let me come to you one by one. This area concept is clear or not?